In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about subject English unit 10. Its topic is Eid al-Adha. Dear students, first of all we discuss about learning outcomes of unit 10 part 3. Illustrate extended use of words that point to something. Recognize verbs as regular and irregular. Use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph. Revise written work for correct spelling and punctuation. Illustrate the use of should not to express obligation. Recognize and use the apostrophe with contractions. Dear student, now we discuss Act 3 Grammar. Pointing words. Pointing words are used to point to people and things. Pointing words वो होते हैं जिसमें हम किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. We use this singular and these plural to refer to things that are near. वो चीज़ें जो हमारे करीब होती हैं उनके लिए हम दिस यूज़ करते हैं या दीज. अगर सिंगुलर है तो दिस यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो दीज यूज़ करेंगे. एंड डैट सिंगुलर एंड दोज प्लूरल टू रेफर टू थिंग्स डैट आर फॉर अवे. वो चीज़ें जो कि दूर हैं उनके लिए अगर वो सिंगल है और दूर है तो उसके लिए हम डैट यूज़ करते हैं. अगर कोई प्लूरल में है और दूर है तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं. Read the given sentences and notice the use of demonstrative pronouns. I have to eat apples and mangoes. These are my favorite. Apples and mangoes. These are plural and so we use these. I planted tomatoes and potatoes. These were easy to plant. We bought a new chair from the market. This is very comfortable. I lost my book last year. That was about the history of Pakistan. In this sentence we use these, this, that pointing words. Fill in the blanks with the correct demonstrative pronouns. You will have to use your pen. That is mine. Let me introduce you. Ali dash is Suleiman. This. I have 5 new dresses. Look dash are very beautiful. These. I made sandwiches yesterday. Dash were delicious. Those. Student, the next activity is use of should and should not. We use should to talk about an obligation or for things that are important for people to do. Should का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, इस बात में यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, हम इम्पोर्टेंट जो कि लोगों के करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं. We use should not to advise against doing something because it is bad or wrong to do so. वो काम जिसको हम करने से मना करते हैं या जो बुरे काम है उससे मना करने के लिए हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं. जैसे रीड द गिवन सेंटेंसेस ऑफ शुड एंड शुड नॉट. वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. दैट इज़ अ गुड थिंग एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड नॉट गो आउटसाइड एट नाइट. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अवॉइड दिस बैड थिंग. यानी go outside at night, it is a bad thing and we should not do it. And throw garbage in the street, it is also a bad thing and we should not throw garbage in the street. Write 2 sentences using should and should not in your notebook. Student, आपने should और should not का use करते हुए sentences make करने हैं. Dear student, read your page and make sentences by using should and should not. Words, sentences. Should. We should always speak the truth. Should.
We should always follow the traffic rules. Should not, we should not throw garbage in the street. Should not, we should not make a noise. Should not, you should not eat too much junk food. Should, we should obey the traffic rules. Student, the next activity is apostrophe. Use of apostrophe. We use the apostrophe to break the omitted letters in contractions. When we combine two words, we omit some letters. स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो इसमें से कुछ लेटर्स को हम ओमिट कर देते हैं, यानी उनको मिस कर देते हैं, उनको गायब कर देते हैं, और हम दो वर्ड्स को मिलाकर फिर एक न्यू प्रोनाउंसिएशन के साथ उसे रीड करते हैं और अपोस्ट्रोफी का उसमें यूज़ करते हैं. जैसे रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी. स्टूडेंट, आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना और इसमें से एपोस्ट्रोफी के यूज़ को नोट करना है. जैसे वो गो होम अर्ली, दे डिडंट वेस्ट देयर मनी. अब ये वर्ड था डिड नॉट. अब इसमें से हमने ओ को ओमिट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जगह पे हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है, और उसको यूज़ करने के बाद हम वर्ड पढ़ेंगे डिडंट. He isn't going home with us. I'm happy to see you. They're celebrating the Eid festival. Act VI, make contractions of the following words using the apostrophe correctly in your notebook. Students, हमारे पास कुछ words हैं जैसे could not, I have, should not, you will, does not. These are the words. अब इन words में हमने कुछ लेटर्स को ओमिट करना है और उसकी जगह पर हमने अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है, जिसकी वजह से वो अपोस्ट्रोफी वर्ड्स बन जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, read your page and also use the apostrophe in given words. Couldn't, I, shouldn't, you'll, doesn't. Dear student, the next activity is adverbs of frequency. Do you know about what is adverb of frequency? Adverbs of frequency tell us how often or frequently something happens. Read the given sentences and notice the use of adverbs of frequency. She always sacrificed a camel on Eid al-Adha. In this sentence, the word always are adverb of frequency. They often go to the park for jogging. They rarely makes a mistake in the test. In these sentences, the word always, often, rarely are the adverbs of frequency. They sometimes play cricket on the weekend. In this sentence, the word sometime is the adverb of frequency. I never forget my keys in my room. In this sentence, the word never is the adverbs of frequency. The next activity is read the given paragraph and underline the adverbs of frequency in it. Dear student, आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और इसमें आपने एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी को नोट करके उसे अंडरलाइन करना है. जैसे कि आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑलवेज हैव अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई ऑफन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ माई फादर. इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑफन is a adverb of frequency. Sometimes we go to the nearby park. In this sentence, the words sometimes are adverb of frequency. After that, I take my breakfast and get ready for school. I often take sandwiches for breakfast. My school bus usually arrives at 7 a.m. In this sentence, the word usually is a adverb of frequency. I am never late for school. In this sentence, the word never is a adverb of frequency. In this sentence, we underline always, often, sometimes, usually, never. These are the adverbs of frequency. Act D, writing, learning to write. Suleiman and his sister made a dessert for an Eid party. Let's read what recipe they followed for making chocolate banana pops. Students, सुलेमान और इसके सिस्टर ने मिलकर ईद के दिन एक डेजर्ट जो है वो बनाया था और उसका नाम है चॉकलेट बनाना पॉप्स. और इसके लिए सबसे पहले उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत थी? थिंग्स वी नीड
one large banana, and second is a bar of chocolate. This is the recipe, यानी रेसिपी यानी कि मेथड, तरीका कि किस तरह से जो है उन्होंने चॉकलेट बनाना पॉप्स बनाए. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कट द बनाना इनटू स्लाइसेस, स्लाइड ईच स्लाइस ऑन टू द टॉप ऑफ अ टूथपिक, put the bar of chocolate in a bowl, melt the chocolate, dip the banana slices into the melted chocolate, place the chocolate banana pops in a tray, freeze them, serve frozen. This is the recipe for chocolate banana pops. Dear student, the discussion of Unit 10 Part 3 completed. This is your home task. Act 2 Creative Writing. Write a paragraph on the topic A Good Day with My Family in your notebook. Students, आपने एक पैराग्राफ राइट करना है जिसका टॉपिक है गुड डे विद माई फैमिली, कि एक अच्छा दिन जो कि आप अपनी फैमिली के साथ गुजारा उसके मुतालिक आपने एक पैराग्राफ राइट. आपने इस पैराग्राफ को 5 to 6 सेंटेंसेस में राइट करना है. Dear students, after completing this unit, I hope you will be able to apply critical thinking to interact with the text, demonstrate conventions, find out how many syllables a word, apply strategies to comprehend questions, read tables and charts, use words similar and opposite in meanings, join some words to make common compound words, illustrate the use of words that point to something, use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph, revise written work for correct spelling and punctuation, illustrate the use of should and should not, recognize and use the apostrophe with contractions. Dear students, read the whole lesson carefully and do the written practice of dictation on your notebook, and learn the all activities and do the written practice of question answer and the important activities. Take care and Allah Hafiz.